lovelies, welcome back to my channel. I hope you all are safe and doing well. Merry Christmas to all of you, and yeah, I really hope you guys like this Christmassy backdrop. Let me know what you think about it. So in this video, I'm gonna share with you guys one thing which has changed my makeup game, and if I say that it has changed my makeup game, I mean it. And this product really helps the makeup to stay in its place for a longer period of time. And I'm talking about this NYX makeup setting spray. Now the one that I've been using currently is this one, which is in the dewy finish variant, but it also comes in another variant which is the matte finish variant. Now let's all agree to this fact, हम इतना time लगा के makeup करते हैं, इतने अच्छे products use करते हैं, and different makeup looks recreate करते हैं, but उसका क्या फायदा अगर हमारा makeup थोड़े time बाद bleed होने लग जाए, vanish होने लग जाए. So to make sure that your makeup lasts really long, it is very important to use a good quality setting spray, makeup setting spray. And I think मैं इस product को कुछ 2-3 महीने से use कर रही हूँ, and let me tell you, I can definitely see a huge difference in my makeup game. मतलब this is like a must product in my makeup collection. And मैं इस makeup setting spray को इतने सारे ways में use करती हूँ ना, जिसके बारे में मैं आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगी. But first let me tell you that NYX is a professional makeup brand and they have great quality products, guys. इनकी जो pricing होती है वो भी काफी accessible होती है. And honestly I've seen a lot of people using NYX Professional Makeup. मतलब जितने भी beauty gurus होते हैं, influencers, makeup artists वगैरह होते हैं, मैंने हर किसी को NYX Professional Makeup के products use करते हुए देखे हैं. And जितने भी हमारे beauty gurus वगैरह हैं YouTube पे, मैंने हर किसी के मुंह से इस सेटिंग स्प्रे की तारीफ ही सुनी है. लाइक आई डोंट नो एनीवन जिसको ये सेटिंग स्प्रे ना पसंद हो. एंड द वन दैट आई हैव बीन यूजिंग रिसेंटली इज दैट ड्यूई फिनिश वेरिएंट, क्योंकि अभी विंटर टाइम है एंड विंटर्स मेरी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई एंड फ्लेकी हो जाती है एंड आई नीड दैट ड्यूई लुक. तो मैं इसी को अभी करंटली यूज कर रही हूँ. इट सेज NYX प्रोफेशनल मेकअप ड्यूई फिनिश long lasting setting spray, and it claims that it is a lightweight water based setting spray that keeps your makeup looking dewy and amazing. Okay, you know what, it actually does what it claims. I kid you not, like I am just highly impressed with this product. And the other variant, which is this matte finish variant, अगर तुम लोगों की oily skin है ना, trust me, this will be your best friend. I think I've shared with you guys earlier as well that my mom has oily skin, like extremely oily skin है उनकी, and she sweats a lot. तो जब भी I do her makeup, I always make sure कि इसको मैं अच्छे से उनके फेस पे स्प्रे कर दूं. उनका जब भी मैं बेस करती हूँ तो एक बार अच्छे से स्प्रे करती हूँ, एंड देन जब ओवरऑल मेकअप हो जाता है तब भी आई यूज दिस. एंड जितना भी उनके फेस पे एक्सेस ऑयल एंड स्वेट आता था ना, उसको काफी हद तक ये सेटिंग स्प्रे कंट्रोल करता है एंड उनके फेस को एक मैट फिनिश देता है. सो दिस इज लाइक अ हाईली इंप्रेसिव प्रोडक्ट फॉर मी. नाउ अनदर थिंग व्हिच आई रियली लाइक अबाउट NYX प्रोफेशनल मेकअप, दैट इट इज अ क्रूअल्टी फ्री ब्रांड एंड इनका जो फॉर्मूला है इट इज वीगन, व्हिच इज अ ग्रेट थिंग. सो दिस इज समथिंग वी रियली नीड टू स्टार्ट लुकिंग एट व्हेन इट कम्स टू बाइंग मेकअप. एंड नाउ आई एम गोना शो यू गाइज अ क्विक स्वॉच टेस्ट टू एक्सप्लेन हाउ दिस मेकअप सेटिंग स्प्रे exactly works and how it actually helps to keep the makeup intact. So what I'm going to do is मैं अपने हैंड पे 2 डिफरेंट स्वॉचेस करने वाली हूँ, एक लिपस्टिक का एंड एक काजल का. एंड काजल और लिपस्टिक के एक स्वॉच पे आई एम जस्ट गोना स्प्रिट्ज दिस मेकअप सेटिंग स्प्रे, एंड जो दूसरा वाला स्वॉच है उस पे मैं कुछ भी स्प्रे नहीं करूंगी. एंड नाउ आई एम जस्ट गोना लेट द सेटिंग स्प्रे, द मेकअप सेटिंग स्प्रे ड्राई फॉर सम टाइम. एंड एज यू गाइज कैन सी के जिन स्वॉचेस पे मैंने ये मेकअप सेटिंग स्प्रे लगाया था वो बिल्कुल भी स्मज नहीं हो रहे हैं, व्हेयरएज जहाँ पे मैंने ये मेकअप सेटिंग स्प्रे यूज नहीं किया था वो लिपस्टिक एंड काजल एकदम स्मज हो चुके हैं. यू गाइस कैन सी, व्हिच मींस कि मेकअप सेटिंग स्प्रे हमारे मेकअप को बिल्कुल भी स्मज नहीं होने देता है. एंड ये एक्चुअल में काफी ज्यादा लाइट वेट है. लाइक अभी मैंने ये सेटिंग स्प्रे यूज किया हुआ है ना, मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि मैंने अपने फेस पे कुछ यूज किया है अपने मेकअप को ऐसे इंटैक्ट रखने के लिए. एंड इसका एप्लीकेशन प्रोसेस भी काफी ज्यादा सिंपल है. सो वंस यू आर डन विद योर मेकअप, ऑल यू हैव टू डू इज just keep this setting spray 6 inches away from your face and spray this evenly onto your face. Remember that the spray should not be very close to your face. इसको 6 inches दूर ही रखना ताकि evenly spread हो जाए आपके face पे. And also you don't have to spray a lot of it, कि मतलब एकदम ऐसे shower नहीं लेना है. So 3 to 4 sprays would be enough. And once you have applied this product, just make sure that you let it dry for a few seconds so that ये setting spray आपके makeup को काफी अच्छे से lock कर ले. And now I'm gonna show you 3-4 more ways as to how I like to use this NYX मेकअप सेटिंग स्प्रे. तो सबसे पहले आई लाइक टू यूज दिस सेटिंग स्प्रे एज अ प्राइमर. जब मैंने कुछ भी नहीं लगाया होता ना अपने फेस पे, अपने स्किन केयर के बाद मैं 1 या 2 स्प्रेज अपने फेस पे कर लेती हूँ. एंड इट रियली हेल्प्स टू प्रेप योर फेस फॉर अ सीमलेस बेस एप्लीकेशन, यू कैन से. एंड समटाइम्स आई इवन स्प्रे दिस ऑन टू माई ब्यूटी ब्लेंडर, ताकि जब भी मैं अपना फाउंडेशन ब्लेंड करूँ ना, इट वुड एक्चुअली हेल्प द फाउंडेशन सिट अ लॉट बेटर ऑन टू माई
skin. Also, this hack actually makes the whole application process a lot more easier. Also, another very cool hack that I've been doing since a while now is कि जब भी मैं अपना बेस मेकअप कर लेती हूँ ना, I just like to spritz एक दो spray onto my base makeup and then मैं एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अपने बेस मेकअप को अपने स्किन में ना पुश कर लेती हूँ अच्छे से, ताकि वो काफी ज्यादा सीमलेस लगे, काफी ज्यादा नेचुरल लगे. सो दिस इज समथिंग विच आई हैव बीन डूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड यू नो व्हाट, मुझे अपने बेस मेकअप के लिए कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं कि मतलब मैं अपना बेस कितना अच्छे से करती हूँ. नाउ अनदर वे इज टू यूज दिस मेकअप सेटिंग स्प्रे ऑनटू योर आई शैडो ब्रश, और फिर उस ब्रश से जब अपना आई शैडो लगाओगे ना, यू वुड नोटिस कि जो आई शैडो होगा वो ज्यादा पॉप आउट होगा एंड जो कलर पे ऑफ होगा ना आई शैडोज का, वो भी काफी ज्यादा बेटर होगा एज कम्पेयर टू हाउ इट यूजुअली इज. एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू शो यू गाइज कि मेरी स्किन विद एंड विदाउट मेकअप सेटिंग स्प्रे कैसी लगती है. सो दिस इज व्हाट माय मेकअप लुक्स लाइक विदाउट अ मेकअप सेटिंग स्प्रे. यू गाइज कैन सी इट लुक्स थोड़ा सा डल एंड I don't know, I am just not liking the finish, you know. And this is what my skin, my overall makeup looks like after I use this makeup setting spray. My face looks very much, you know, dewy, and obviously it would help me to keep my makeup intact for hours and hours. And साथ ही में मेरे फेस पे इतनी अच्छी सी जो फिनिश भी दे रहा है ना, वो भी I'm actually liking. So this 60 ml bottle retails for 875 rupees, which I think is pocket friendly because just keep in mind that NYX is a professional makeup brand and their products are of a great quality. So मुझे तो पता है that this is like my forever love now, but just to show you guys, मैं different time stamps डाल दूंगी. So this is what my makeup looks after 3 hours. You guys can see कि कहीं से भी you know टच से मस नहीं हुआ है मेरा मेकअप, वैसे का वैसा ही लग रहा है. And this is what my makeup looks after 6 hours. You guys can see कि कहीं से भी कुछ भी smudge नहीं हुआ है and the makeup actually looks fresh अभी भी. And this is what my makeup looks after 8 hours. Unbelievable, right? मतलब एक बार आप इसको अपने मेकअप पे स्प्रे कर लोगे ना, you won't be requiring any touch-ups whatsoever. कोई touch-ups की जरूरत नहीं है. स्टार्टिंग से एंड तक आपका मेकअप वैसे का वैसा ही रहने वाला है. एंड आई वुड 100% रेकमेंड यू गाइज दिस सेटिंग स्प्रे बिकॉज बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है स्किन पे. 2 वेरिएंट्स आते हैं, सो आप अपने स्किन के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो. सो इफ यू ऑल्सो वॉन्ट योर मेकअप टू लास्ट लॉन्ग और वो बच भी ना हो, कोई टचअप्स करने की भी जरूरत ना पड़े, प्लीज डू गिव इट अ ट्राई बिकॉज इट जस्ट मेक्स मी गो वाओ एवरी सिंगल टाइम आई यूज दिस. इट रिटेल्स ओनली ऑन नायका, सो मैं उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी. सो या दैट्स प्रीटी मच इट फॉर दिस वीडियो. आई रियली होप यू guys enjoyed watching it and I hope कि तुम लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रही हो. And if it was, then please make sure you give this video a big thumbs up. Subscribe to my channel for more such videos. In case you guys would like to connect with me on my social medias, then I would surely leave all the links for you in the description box below as always. And yes, I shall see you next time. Till then, you all please stay safe, stay positive and be kind to yourself and others. Bye bye.